Good morning everyone. Today we are in Ho Chi Minh. This is the last city in Vietnam. और अभी हम लोग टैक्सी स्टैंड में हैं. So we are going to a hotel. We'll check in and then we'll figure out what to do today. We were strolling around the streets of District 1 and found this temple, Mariamman Temple, which is dedicated to the Hindu goddess Mariamman. So it's in District 1, so anyone can come and offer their prayers here. Hello everyone, good morning from Ho Chi Minh. We are going to tunnels and अपना ये गाड़ी में बुक हुआ है. Vietnam from the north went down the south. You know from the south because why? Because 1954 we divided north and south. The south belongs to democracy, republic country. So we had booked this half-day tour to Chu Chi tunnels from a travel agency which was right across the streets of our hotel, and the first stop was Ho Chi Minh Handicap art and craft factory, where they make paintings and other decoration stuffs from eggshells and seashells. So there's also a store attached to it. You can just buy whatever you like. Yup, time for some history lessons. So here is Cu Chi tunnels, and this place talks about the guerrilla war and how the Vietnamese soldiers and the locals hid during the combat and how they survived. You have a look here. Small hole. Yeah, of course. Not easy for the big body. So this is one of the many traps जो कि पूरा एरिया में मिलेगा. This one we call tiger traps. Tiger to the biggest trap. Yeah. So a very small part of the tunnel is accessible to the tourists, but not all, obviously, for obvious reasons. Just follow. 6'2" guys. Just follow. There is a thing to jump, okay? Oh my god, oh my god. Oh god. ये हम लोग 100 मीटर्स वहाँ से निकले हैं. अंदर बहुत गर्मी है, बहुत छोटा छोटा रास्ता, बहुत छोटा है. अभी फ़िलहाल लाइट्स लगाए हैं, बट शायद उस समय पता नहीं कैसे जाते थे लोग. I didn't realize you were coming out in it. Oh god. So towards the end they offered us tapioca with peanuts and salt or sugar. So it was good. It tasted good. क्या है? अंदर में बस रिप्रेजेंटेशन है जो एक्चुअली में था. जो टनल्स में हम लोग घुसे थे वो उससे भी छोटे टनल्स है, ऐसा वो बोला है. उससे इट वॉज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन फॉर द टूरिस्ट. बस यही है. मेन है हाफ डे इसीलिए लग जाता है क्योंकि सिटी से बहुत दूर है. तो वही हम लोग कितना में बुक किए थे? 2500 फॉर 2 पीपल. अराउंड यही 1300 कुछ है पर पर्सन का. और एक टूरिस्ट वैन में लेके आते हैं हम लोग. 25 लोग बोल रहे हैं. हम लोग 25 लोग थे. जनरली वो बोल रहे थे 10-15 होते, बट आज ज़्यादा था. और आज बारिश भी हो गया. तो वी आर रोमिंग इन द स्ट्रीट्स ऑफ हो chi minh. अभी हम लोग जा रहे हैं बुई वियन के पास. वी आर ट्राइंग टू गो उधर. थोड़ा सा लेफ्ट राइट में दिक्कत हो रहा है. ठीक है, बट ये जगह एक्चुअली बाकी सिटीज़ से काफ़ी महंगा है, बाकी जितना भी वियतनाम में है. यहाँ हम लोग ATM ढूंढते कहाँ से चल के आए हैं. बहुत ट्रैफिक है आज. Hello, so we are in Bui Vien walking street. So this is also a very happening place in Ho Chi Minh. It's similar to the Vien Street in Hanoi.
So yeah, I think माहौल तो बहुत अच्छा लग रहा है. बहुत सारे पब्स है यहाँ पे, डीजे, म्यूजिक, बियर, सब बहुत है. क्या हो रहा है? मनीष Good morning. Today is day 2 of Ho Chi Minh City and I am going to Mekong Delta. Trisha will not be going as the flight is at 5:30. I mean she has to leave by 5:30. So I am waiting for other people to come and then we'll start. So it's a full day tour and it costed me around 2,000. Yeah. Saigon is 12 million people and there are 6 So I had to booked 7 this one million day tour of Mekong Delta via the Viator app and it costed me around 2,000 INR. So visit to this Vien Trang Pagoda was also a part of the package. So it's 9:45 now. So our guide has explained some things about the various statues. That is the Buddha which signifies the future. This is the laughing Buddha which is for luck and prosperity. The reclining Buddha represents the time when Gautam Buddha was entering the parinirvana. So अभी टेंपल के बाद हम लोग यहाँ मेकोंग डेल्टा का छोटा सा टूर करने वाले हैं. यहाँ से टिकट्स लेते हैं. हम लोग का ऑलरेडी बुक था. एंड अभी होपफुली हम लोग को कुछ खाने का दे. बहुत ज़ोर से भूख लग रहा है. खाने का इंक्लूडेड है वैसे इसी में. त्रिशा नहीं आएगी बट ठीक है अभी हम अकेले मेकोंग डेल्टा टूर करेंगे. Now we are crossing the Atom River in the branch of Mekong. You know Mekong is the river in South. Don't scream so loud. We are living in this cruel world. Broken but strong, gotta move on. You are not a bakery of life. Equip my soul, find the real gold. I'll fulfill what I started. It was so crowded but can't blame anyone actually because I was also a part of it. Two guys sitting behind me were cracking so many jokes. So yeah, this boat ride was for 20-30 minutes and then we went to taste some honey. And compare. That is queen bee. सो पेट पूजा डन और अभी ये कोकोनट टॉफीज कैसे बनता है वो हम लोग देखने आए हैं. वी ऑल्सो गॉट टू टेस्ट सम एंड इट वॉज यम. एंड इसके बाद ये छोटा सा साइकिल टूर था. वो एरिया में आप जितने भी टाइम के लिए आप साइकिल चला सकते हैं. I don't know if I'm lost or it's actually the way. People are coming back. यही से चल रहा है.
Okay. No, Yeah, you guys continue. you're causing traffic here. क्या क्या कैरी करते हैं लोग वो देखो। तो ये ट्रिप अराउंड 2000 का था। वर्थ इट था या नहीं आई डोंट नो, लेकिन हाँ वो बोट राइड, वो मेकोंग डेल्टा के बारे में जितना बताया, फिर कोकोनट का जो टॉफ़ीज़, स्नैक वाइन, लंच सब अच्छा था। और लास्ट में ये साइकिल राइड वो भी बहुत अच्छा था। काफ़ी इंडियंस मिले हैं और काफ़ी अलग अलग नेशनैलिटीज़ के भी लोग मिले। सो इट वॉज फन, आई लव्ड इट। लास्ट डे मेरा हो ची मिन में बहुत सही रहा। सो फाइनली मेरा ट्रिप अभी ख़त्म हो रहा है। हो ची मिन एयरपोर्ट में है एंड मेमोरेबल ट्रिप रहा, काफ़ी गुड बैड एवरीथिंग। थैंक यू वियतनाम।